Hello students, today we are going to learn the exercises from the chapter Shakuntala. Okay, as you know, Shakuntala is a poem. It's written by which is the poet? Who is the poet? Maitri Sharan Gupta. You know that he was known as national poet, राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं, है ना? So today we are going to take the exercises from this chapter, page number 70. Are you all ready? Okay, so see children, the second question we will do now. सही या गलत का निशान. Mark true or false. That's the first question. After question answers, सही या गलत is coming. Okay, so I'll read it for you. All of you listen properly. शकुंतला शहर में रहती थी. Is it correct? शकुंतला कहाँ रहती थी? शहर में या आश्रम में रहती थी? आश्रम में, हेरिटेज में, है ना? सो ये सेंटेंस सही है या गलत है? ये सही है या गलत है? यू हैव टू टेल दैट. शहर में रहती थी मीन्स टाउन में रहती थी, टाउन में. शकुंतला वाज लिविंग इन अ टाउन. इज इट करेक्ट? नो. सो ये गलत है, ये वाक्य गलत है. ओके, नाउ द सेकंड वन विल रीड नाउ. वो अपने आचरण से पशु पक्षियों को दुखी करती थी. शकुंतला अपने आचरण से पशु पक्षियों को दुखी करती थी. इज इट करेक्ट? शकुंतला कैसी थी? वो अपने अच्छे आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने स्वीट बिहेवियर से क्या करती थी? पशु पक्षियों को सुख देती थी और दुख देती थी. क्या आंसर है इसका? दुखी नहीं, सुख देती थी, है ना? उसे सुखी बनाते थे, खुशी देते थे, है ना? सो ये आंसर, ये सेंटेंस सही है या गलत? ये दुखी करती थी, वो गलत है. ओके, इट इज गलत, इट इज रॉन्ग. सो यू हैव टू राइट, यू जस्ट मार्क इट द रॉन्ग. ओके, देन द थर्ड सेंटेंस. शकुंतला घड़े में पानी भरकर पौधों में डालती थी. शकुंतला घड़ों में पानी भरकर आती थी. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. सो देयर इज अ पिक्चर गिवन इन द चैप्टर. शकुंतला के हाथ में क्या है? एक घड़ा है. घड़ा यानी pot है. In that pot, she filled water in that pot and she gave water to whom or what? Yeah, she was watering the plants. Okay, so ये पौधों में डालती थी. पौधा क्या है? Plant. So ये sentence correct है, सही है. Okay, now we'll move to next question. Next sentence, that is, वो मयूर को पाठ पढ़ाती थी. मयूर यानी क्या है? मोर, मोरनी, मयूर, है ना? सिनोनिम्स फॉर मोर, मोरनी, मयूर, ये सब पीकॉक का वर्ड है, हिंदी वर्ड से. सो मयूर को वो क्या पढ़ाती थी? शी वॉज टीचिंग द पीकॉक हियर, है ना? सो क्या पढ़ाती थी वो? नाचना, है ना? नाचना सिखाती थी, पढ़ाती थी, पाठ नहीं. ओके, शी वॉज नॉट टीचिंग द पीकॉक अ लेसन. वो नाचने को सिखाती थी, नाचना सिखाती थी, है ना? सो ये सही है या गलत? इज द सेंटेंस करेक्ट और रॉन्ग? व्हाट इज इट? या डेफिनेटली इट इज रॉन्ग. सो पाठ पढ़ाती थी, यू हैव टू करेक्ट इट एज नाच. नाचना सिखाती थी. सो ये गलत है. ओके, नाउ द लास्ट सेंटेंस. वो अपनी सहचरियों के साथ खेलती थी. सहचरी कौन होती है? सहचरी यानी फ्रेंड, सहेली. वो अपनी सहेलियों के साथ खेलती थी. कहाँ खेलती थी? वृक्षों के नीचे, छाया में, है ना? सो ये सेंटेंस सही है. सहचरी अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ खेलती थी. ये सही है. ओके, नाउ ट्रू और फॉल्स फिनिश. नाउ विल मूव टू व्हाट द लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन इट इज. And between 3 and 4 question is, third and fourth question is coming. Is one is for match the following. You can do it yourself. Now fourth also, complete the lines of the poem. That also you can do yourself. Okay. Now the fifth question. वाक्यों को संशोधित करके लिखिए. संशोधित करना, संशोधित, that means correct करना. Okay, some incorrect sentences are here, written here. You have to correct it according to the chapter. Okay. Some words are wrong here, so we want to correct it. Okay, so we'll read the first question, that is, शकुंतला अपने व्यवहार से सबको दुखी करती थी. As I told you earlier, शकुंतला अपने व्यवहार से सबको क्या बनाती? दुखी या सुखी करती थी? सबको
खुशी देती थी ना. So want to correct it yourself. You correct yourself. You take it as homework for you. Now the second one will read. शकुंतला घड़े में जल भरकर सहेलियों को देती थी. सहेलियों को अपने घड़ों में, अपने हाथ में जो घड़ा है, पॉट है. घड़ा क्या है मीनिंग? पॉट. यू कैन सी अ पॉट इन हर हैंड. शकुंतला के हाथ में एक घड़ा है. तो घड़ों में क्या भर के आती थी? पानी. तो वो किसको देती थी पानी भरकर? अपने सहेलियों को या पौधों को देती थी? पौधों को, है ना. सो राइट इन सच वे. करेक्ट दैट वर्ड. ओके, इनकरेक्ट वर्ड इज दैट. सो करेक्ट इट एंड राइट. नेक्स्ट वन, थर्ड वन. शकुंतला को खेलना बुरा लगता था. इज इट करेक्ट? शकुंतला को खेलना बुरा लगता था. शी डोंट लाइक टू प्ले. शकुंतला को अच्छा नहीं लगता था, बुरा लगता था. इट्स रिटन लाइक दैट. बुरा लगता था. She disliked that playing these games are all. Is it like that? No. So what you have to write the शकुंतला को खेलना बहुत अच्छा लगता था. You have to correct as this way. Okay. शकुंतला पशु पक्षियों को तंग करती थी. ये सही है. तंग करना. What is meant by तंग करना? Tease. To tease someone. Teasing. Okay. शकुंतला was teasing the birds and animals. Correct? Correct है? नहीं है. So कैसे आपको ये करेक्ट करना है? How to correct this sentence? शकुंतला पशु पक्षियों को क्या करती थी? Want to find out? Okay, you write yourself. I told you the meaning here. तंग करती थी means was teasing. She was teasing the birds and animals. Correct it yourself. You know, according to the chapter what we studied. Okay, write yourself. Now, grammar session. We will discuss grammar now. Grammar session, page number 71. Okay. व्याकरण बोध. जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा. You know that जातिवाचक संज्ञा. Nouns. Different types of nouns we have learned. Proper noun. That means क्या है? व्यक्तिवाचक. जातिवाचक यानी common noun. So here some common nouns are given here. No, given in the textbook. बच्चा. You can see लड़का. बच्चा, बाल, शत्रु, प्रभु. These words are जातिवाचक संज्ञा. Common nouns. Which are coming as common. That means groups. Okay, not particular one. So from this noun, that means जातिवाचक संज्ञा, from this common noun, we can make some abstract noun. What is the abstract noun? We have learned earlier. Abstract noun and यानी the name of the emotions, the words which are using for emotions, life stages. Okay, feelings. Okay, these nouns are known as abstract nouns. For example, happiness, friendship. In English we can say all these words as abstract noun. Honesty. Okay, what is the common noun for this? Honest. That is Visheshan actually. Honest man, isn't it? Then honesty is the noun word, abstract noun. Truthfulness, friendship, all these words are abstract noun. You know that. So here we can make some. We are going to make some abstract noun from common nouns. Okay. First one is done for you. लड़का. लड़का यानी boy. है ना? लड़का क्या इसका meaning क्या है? Boy. So from that we can make, from this word we can make what? Abstract noun. Okay. You have to tell the stage, life stage of the boy. That means boyhood actually. लड़का लड़कपन. Okay. लड़का लड़कपन. We can say that life stage of लड़का. लड़कपन. लड़कपन means boyhood. That means childhood itself. Okay. लड़का लड़कपन. Next one, see one more example given with red color in red ink. Now we are going to read the same as written here. लड़का लड़कपन. Down of that some words are coming. The same words are coming. I have to make in the same way. First of all, we'll read that. Okay. I have written on the board also the words. The first one, बच्चा. बच्चा means child. So we are adding pan with that. बच्चा plus pen, बचपन. One more thing we have to remember that, careful about it. बच्चा, while writing बच्चा word, there are two ch, संयुक्त व्यंजनाक्षर. Cha half and full cha is written. No, you can see the board on the board. So when we add pan with that, we will get abstract noun बचपन. So only one cha is needed. Okay, बचपन. That's all. Not बच्चापन. That's only बचपन. Okay.
Now like that bal plus pan, balpan. It also means childhood. बाल कौन होता है? लड़का, है ना, child. So bal plus pan, balpan. From that bal we can make abstract nouns such as balpan, childhood. Okay, the life stage of the child. Okay, is it clear for you? Okay, now next one, pashu. Pashuta is returned there as example. Pashuta yani what's mean pashuta? Animalism. That means like animals. Pashu hone ka bhav, है ना, the quality of animals, isn't it? So pashu, pashuta. Like that, shatru, shatruta. While adding ta, we will get abstract noun. Shatruta, enmity. Shatru means enemy. Shatruta yani enmity. Understood? Now the last word, prabhu, Ishwar, God. No? So prabhu plus ta, we are adding ta with that, and we will get abstract noun as prabhuta. That means what's mean by prabhuta? Ishwar hone ka bhav, Ishwar ka adhikar, isn't it? In English we can say superpower, isn't it? Superpower of the God Almighty. Prabhu, prabhuta. That's hone ka bhav, Ishwar hone ka bhav, unka power. Okay. So I hope that all of you understood about this abstract noun. While adding some pratyay, we can make abstract nouns. Okay. So we have learned pan is a pratyay. Bacha, bachpan. Bal, balpan. Ladka, ladakpan. Shatru, shatruta. Pashu, pashuta. Prabhu, prabhuta. These are the abstract nouns. Okay. Now second question, one more question is there in the grammar session, the last one in here, and after that creative writing coming. So see shabd ka prayog, it's for see. You can look in your textbook. See, it's for what we are adding, see. Okay, I will tell you the example. इसका प्रयोग समानता के लिए करता है. समानता, what is mean समानता? Comparison के लिए. Okay, similarity के लिए करता है. See. We will read some examples, then you will understand properly. The first one, first of all, some boxes are given there and some words are written in the box. Okay. Down of this, one example in red color, it has written here. First one, baraf, then one hyphen C, baraf C. Okay, we can say baraf also, baraf C. Baraf C means like ice, isn't it? Very cool like ice. Baraf si, thandi. We can add one more word after that. Thandi means very cool. Cool like what? Baraf, ice. Like the ice. Comparing with the ice. Something we are comparing something with that ice, isn't it? Ice cream is very cool. You know that. Otherwise, anything else we can add. We can say about anything. Something is like the ice. Very cool like ice, isn't it? First one. तेल सी क्या होते हैं? तेल means oil, isn't it? We'll read all the words given in the brackets. First one, सफेद. सफेद यानी क्या है? सफेद कलर का कुर्ता. क्या है सफेद? White. Okay. Now मीठी, sweet. मीठी यानी sweet. कड़वी, bitter. कड़वी, दवा कड़वी होती है. Medicine is bitter, isn't it? Bitter gourd is bitter. कड़वी होती है. कोमल, कोमल यानी soft. हल्की, हल्की means which is not having any weight, very light weighted. That is mean हल्की, no weight at all, very light and soft or light. चिकनी, चिकनी क्या होती है? चिकनी, चिकनी means smooth, very smooth. Okay. तेज, तेज यानी fast. Says about mentions the speed, actually fast, tez, fast. Okay, now we'll read all the words given there down. तेल सी क्या होती है? Something we are comparing with the oil. तेल सी चिकनी होती है. तेल बहुत soft होती है. When we touch oil, we can feel that softness, isn't it? So that is चिकनी. तेल सी चिकनी. That means very what? Soft like oil. रुई सी, रुई यानी कॉटन. कॉटन के जैसे क्या कैसी होती है? कॉटन कैसी होती है? हाउ द कॉटन विल बी? डू यू फील very weight for cotton? No, it's weightless. So what is the word which is suitable for that? रुई सी हल्की. Okay, weightless like the cotton. Okay, रुई सी हल्की. सी means for like comparing. Okay. Now
दवाई सी, दवाई यानी मेडिसिन, मेडिसिन की जैसी क्या है, दैट मीन्स want to say some quality, the दवाई कैसी होती है, which is good for this, कड़वी, isn't it, bitter, okay, दवाई सी कड़वी होती है, कड़वी means bitter, bitter like medicine, comparing something with the medicine, okay, it is bitter like the medicine. शहद सी, शहद यानी हनी, हनी जैसी, हनी कैसी होती है, स्वीट होती है ना, सो मीठी, हनी जैसी मीठी होती है, शहद सी मीठी, स्वीट लाइक हनी, ओके, सी इट इज फॉर कंपेयरिंग एंड सेइंग द सिमिलैरिटी लाइक समथिंग, isn't it? मखमल सी, मखमल सी क्या होती है, कोमल होती है, सॉफ्ट, मखमल यानी वेलवेट, वेलवेट कैसे होती है, हैव यू सीन वेलवेट और डिड टच वेलवेट, बहुत ही सॉफ्ट होती है, सो मखमल सी सॉफ्ट, दैट मीन्स कोमल, soft like velvet, okay. now next दूध सी, दूध कैसी होती है, क्या कलर है दूध का, सफेद ना, so दूध सी सफेद, white as milk or white like milk, okay. हवा सी, very fast, हवा means wind, it's coming very fast, when it blows fast you can say a very fast moving wind, no, so हवा सी, what is the adjective for word for that, तेज, तेज means fast, fast like the air, the wind, hawasi, what, fast, तेज, understood children? okay, I'll read once more. तेल सी चिकनी, रुई सी हल्की, दवाई सी कड़वी, शहद सी मीठी, मखमल सी कोमल, दूध सी सफेद, हवा सी तेज, understood? these are the words which are using for this is the word. See, it is for comparing something, saying similarity for something, okay, like this, okay. now creative writing, creative writing, I'll read the question for you, you have to write yourself, I'll tell the meaning also. आप किसी गांव या जंगल में सैर करने जाएं, वहां आपको जो बातें सबसे अच्छी लगी उनकी सूची बनाइए, visit a forest or village, write a list of the things which you like most there, okay. now one more is there, one picture is given there, you have to see the picture and write a short conversation between the mother and the child, okay, any topic you can use, and you have to try yourself, okay children. Conversation, what is the word for conversation, samvad, okay. so I hope that all of you understood the grammar session, study the grammar portion properly, for especially abstract noun, okay, and the comparison, it's for using comparing something, saying the similarity, okay. okay, then we'll meet in next class, okay, thank you.